Hello everyone, this is the part 2. So do you like the video and hit the subscribe button, right? And click the bell icon, right? Now we are talking about the food part, that is your esophagus or your voice. The swallowed food passes into the food pipe or voice. तो हम माउथ में swallow करते तो आप ये देखो, ये होती है एक ओइसोफेगस, एक जिससे हम फूड पाइप। क्यों पाइप क्या चीज होती है? जो जो कुछ चीज एक जगह से दूसरी जगह से जिसका हम यूज करते हैं ना, तो दैट इज ओनली, तो हम उसको फूड के लिए यूज कर ले, तो दैट इज व्हाई इट इज अ फूड पाइप। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ फूड पाइप। ओके, and the food pipe runs along the neck and the chest. This is your chest, right? This is your chest region. Now, this is your neck, right? And here is your food pipe, right? So yes, it runs along the neck and your chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe with the contraction and expansion and your esophagus, right? And it is the movement of peristalsis. ओके, तो यही प्रोसेस होती है जिससे फूड पाइप में नीचे जाती है। क्लियर? Along this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards, right? Now, many times we feel like vomited, right? Now, इसमें क्या होता है? तो इसमें ये क्या होता है, ये जो upward movement करती है, muscle starts acting like no more food can be like traveled, right? Or and it is the process of antipersicallysis. Now, basically, there are so many different reasons people vomit. Typically, some sort of bodily issue leads to nausea, and nausea can cause the vomit. तो बेसिकली जब हमें कुछ चीज खाने नहीं मिलती है, राइट, देन वी फील कि लाइक हमें वोमिट करना है, राइट, या फिर हम ज्यादा कुछ खा सके, हम कुछ ज्यादा कुछ खा चुके हैं हम और नहीं खाते, और अगर खा भी लिया तो तब भी आपको हो जाती है वोमिटिंग, राइट? तो दिस इज द थिंग, sometimes vomiting is the body fighting infection, and sometimes vomiting is the result of psychological stress. Why? Because हमें ना अपने मनमर्जी की फूड नहीं मिल पाती, we don't get the nice food, and you know na, nice food are decided by taste buds. जब हमें ये मिलते तो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, एंड इट्स लाइक growing up feels like terribly, right? And it can make you think a situation is worse than it actually is. हमें क्या लगता है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, बट हमें क्या फीलिंग होती है, बहुत बेडली फीलिंग होती है, राइट? And even a sensation of uh, nausea before vomiting feels awful, but nausea does not mean you will infect vomit. तो nausea का मतलब नहीं कि आप vomit करोगे ही करोगे, आप कुछ और भी कर सकते हो, बट हाँ, एक है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो होगी ही होगी। ओके, when in doubt, if you are feeling nauseous or have recently tried to break, तो हमें क्या खाना चाहिए? बनाना खाना चाहिए पहले, तो बाद में राइस खाना चाहिए, फिर बाद में एप्पल खाना चाहिए, फिर बाद में हमें क्या खाना चाहिए? टोस्ट। क्लियर? नाउ अभी स्टमक, राइट, योर लाइक बेली, राइट, हम जिसको बेली बोलते हैं, राइट?
है ना। तो the stomach is a thick walled pig. Why thick walled pig? आप देख सकते हो, it is very very thick, right? Its shapes like a flattened J, right? It's like a J, right? और हम J को क्या क्या फ्लेट करें, alright? And it is the widest part of the alimentary canal. तो फिर widest part of the alimentary canal is your stomach. Widest part. It receives food from the food pipe and one ends and opens into the small intestine. तो फिर ये क्या करता है? ओके, तो देखो समझा पहले क्या करते हैं, जैसे थिक वॉल बेड और इसमें फ्री है, बट हमने इसमें एयर भर दी है। दिस इज एक्चुअली स्टमक। और फिर स्टमक में कौन सी लाइक इट हैज सम एसिड्स और कुछ होती है। तो फिर इसके ना इनर लाइनिंग में होती है म्यूकस। So mucus is a slippery substance that releases from your nose, right? You might have seen when dust particles are around you, right? तो फिर यही होती है आपकी स्टमक में भी। तो फिर आपकी स्टमक में भी म्यूकस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl से भी जानते हैं। एंड इट हैज सम डाइजेस्टिव जूसेस विच जो क्या करती है, वो डाइजेस्ट करती है। इट डाइजेस्ट and the acid kills many bacteria बच्चे। protects the lining of the stomach। तो फिर म्यूकस की पता है ये इनर लाइनिंग है, तो it protects the lining of the stomach। ये lining of the stomach को भी like it protects। okay, clear। तो फिर बाद में ये क्या करते और फिर इसका क्या काम। और फिर जो एसिड होते हैं ना, it kills many bacteria that enter along with the। ऐसा तो नहीं कि दैट लाइक फूड हमसे साफ होगा, राइट? It is not like that कि food हमेशा साफ होगा। It can have millions of bacteria। तो उसे कौन kill करता है? HCl and digestive juices। Okay, and helps the digestive juices to act right। Tentans and वो किस मीडियम में आता है? इस मीडियम में आता है जिससे हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। ओके, and the digestive juices break down protein into simpler substances that breaks down protein into amino acids, right? So the stomach secretes the folic acid, hydrochloric acid, right? Now अब हम करेंगे small intestine। तो small intestine क्या चीज? Now small intestine is long, but however बहुत बड़ी है, but ये क्या होती है, white नहीं है। इट इज अ नैरो ट्यूब। इसी की वजह से जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और फिर एक कोल्ड ट्यूब होती है। दैट्स व्हाई। क्लियर? नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long। so इसको याद रखना, इसका लेंथ होगा 7.5 मीटर। क्लियर? and it receives secretion from liver and pancreas। liver कौन सा like कौन क्या चीज like ये होता है bile juice को, right? It secretes bile juice। and pancreas secretes your pancreatic juice, right? and besides its walls also secrete juices। के walls होते हैं बहुत सारे juices secrete करते हैं। क्लियर? now liver। liver is reddish gland situated in the upper part of the abdomen। देखो तो देखो जैसे स्टमक, तो फिर स्टमक के सामने ही एब्डोमेन या कुछ होती है। आई डोंट थिंक ये पिक्चर में दिखाया है एब्डोमेन। तो फिर ये होती है लिवर। तो वैसे रेडिश ब्राउन ग्लैंड, इट इज वन ऑफ
biggest gland and is just right off the abdomen, and it is the largest grain, and it secretes bile juices, और उसको हम किस में स्टोर करते हैं हम गोल बेड स्टोर। फिर बाइल जूस क्या डाइजेस्ट करता है पेट, और फिर पेट का क्या किस चीज में डाइजेस्ट हो जाता है fatty acids, right? Pancreas. As you can see, this is pancreas, right? It has like इसके अंदर cream जैसा लगता है ना, right? So the pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. As you can see, यहाँ पे स्टमक होगी तो यस इसके लाइक जस्ट पीछे ही क्या होगी स्टमक, सॉरी पेनक्रियास के आगे ही क्या होगी स्टमक होगी। द पेनक्रियाटिक juices acts on the carbohydrates, fats and proteins and changes them into simple form. Basically it means that क्या करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को digest करने में help करते हैं। However, bile juice also helps in digesting and your HCl also helps in your protein digestion again. But yes, ये तीनों को भी और भी ज़्यादा simpler forms में change कर सकती है। That's why the pancreatic juice. Okay, now the partly digested food and now reaches the lower part of the small intestine, and where the intestinal juices complete the digestion of all the components of food. The carbohydrate gets broken down into simple sugar, just glucose, fades into fatty acids, and glycerol and proteins into your amino acids. The complete digestion of food इसमें होती है small intestine, complete digestion of food. और फिर ये किस juices produce करती है intestinal juices, which helps like protein get break into small simple sugars as glucose and fats into fatty acids, glycerol and protein, so amino acids, right? Now the digestion can now pass into the blood vessels and the wallet. तो basically जब हम absorb करते हैं तो फिर उसको travel करने की भी चीज चाहिए होती है ना। तो यही प्रोसेस हम absorption कहते हैं। Okay, this is the thing actually. Guys, wait a second. Okay, let's start. Now, the inner walls of small intestine have thousands of finger-like arcuates. ये finger का जैसा दिखता है ना, this is only called villi. Okay, फिर इसको होते हैं singular villi. Okay, villus. पर जब villi होती है वो surface area को increase कर देते हैं for absorption. Clear? And for after digested food, right? And each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface, right? The surface of the villi absorbs the digested food material. ये क्या होती है outgrowths outgrowths like fingers projection, और फिर क्या होते हैं surface area increase कर देती है absorption of food के, और फिर each villus has a network of thin and a small blood vessel close to the surface, और फिर digest करते हैं food. Okay, now the absorbed via vessels to different organs of the body where they are built where they are used to build complex substances. Protein is required by our body, तो उसको यूज भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे भी एकदम करके तो कुछ नहीं होगा, तो यूज भी तो करना पड़ेगा, राइट? तो फिर वही होती है, राइट? एंड यही को बोलती है एसिमिलेशन, जब हम टाइनी सब्सटेंसेस को फिर से हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको यूज भी तो करना पड़ेगा ना। एंड सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर ये क्या करती है, ये एनर्जी को रिलीज करती है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड होता है अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? This is your large intestine. Okay, large intestine is wider and shorter than the large intestine. ये बस 1.5 millimeter. इसको क्यों large बोलते हैं? Because this is not narrow. Like this is wide.
That is the thing. In length, its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. Okay. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid pieces और फिर उसी को हम remove करते हैं with the process of digestion. Clear? और फिर उससे हम कुछ वाटर और सॉल्ट भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके. डाइजेशन ऑफ स्टार्च नो ये क्या आती है टंग में स्टार्ट होती है राइट इन योर माउथ. टेम्परली stores bile, yes. Digestive juices, its liver, its villi, liver, absorption of food, small intestine, chewing of food, mouth, killing of bacteria, stomach, complete digestion of food, small intestine, formation of feces, large intestine. तो there is a sum मैंने आप read कर सकते हो. ओके. Read कर लो, take a screenshot and write in your notebook, right? So this is your homework. Comment section में आप like you can write in the comment section. Bye bye. Thank you. All right. Bye bye.